हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम मैथ्स रीथ यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं आपके रीमान इंटीग्रेशन चैप्टर का, जो कि हमने लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी कर चुके हैं। तो आज एमसीक्यूज को हम देख लेते हैं। तो दिस एमसीक्यूज इज ओनली बेस्ड ऑन द डेफिनीशन एंड थ्योरम्स, तो इट्स नॉट वेरी बिग डील। Okay, so first is identify the necessary and sufficient condition of Riemann integrability of fx in the closed interval a comma b, where p is any partition. Okay, so you know that u p comma f is the upper Riemann sum and l p comma f is the lower Riemann sum. So upper Riemann sum minus lower Riemann sum should be less than epsilon, and epsilon is any arbitrary number. Okay, so any arbitrary positive number. Okay, so this is should be less than, so difference it should be less than, yeah, you can say approximately the lower Riemann sum should be equal to the upper Riemann sum. Okay, so that's why this option C is correct. So option C is correct for this question. Okay, next question number 2. In a bounded function fx, in a bounded function fx, which statement is not correct? Okay, which statement is not correct? Which is not correct? So upper Riemann integral exists, lower Riemann integral exists. So for the bounded function, the upper Riemann integral will be exist, or lower Riemann integral will be exist. But it is not necessary कि फंक्शन इज इंटीग्रेबल आर, इट इज रीमान इंटीग्रेबल। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, दैट इज अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स आर ऑलवेज इक्वल, इट इज नॉट नेसेसरी। बिकॉज एक बाउंडेड फंक्शन है, उसको हम नहीं कह सकते कि वो इंटीग्रेबल आ रहे हैं। वो उसका रीमान इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है। इट्स मे और मे नॉट। ओके, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सो दे आर आस्किंग अबाउट द नॉट करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज करेक्ट फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट third number problem. If fx is the bounded function, define the closed interval a comma b and let p the partition of a comma b. If p star be the refinement of p, then which option will be true? So lower Riemann sum of the p star is equal to the upper Riemann sum of f. तो ये तो गलत, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। Lower Riemann sum of p star with the p star partition is less or equal to lower Riemann, तो ये भी नहीं। लोअर रीमान सम ऑफ द पी स्टार विल बी ग्रेटर और इक्वल टू लोअर, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। so which will be correct? Because upper Riemann sum will be lesser than the upper Riemann sum of the p. Okay, so this option is correct. Correct option is C. Okay, and this is also very incorrect. Okay, next option पे आते हैं, next question पे आते हैं। If fx is a bounded function defined on a interval a comma b, then fx is integrable r in the closed interval a comma b if and only if. So for integrable r, the lower Riemann integral should be equal to the upper Riemann integral. So this B option is correct. Okay. Next, if m and capital M and small m are the upper and lower Riemann integral of r function fx over the a comma b. So इसमें हमने एक चीज पढ़ा था कि this integration a to b of fx dx is less or equal to capital M times, ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, and this is greater equal to small m of b minus a times. So here is C option is correct, because this is less, is greater equal to this, and this is less or equal to this. Okay, so option C is correct for the fifth question. Next है question number 6. A Riemann integration. In a Riemann integration, identify the incorrect statement. तो यहाँ पर कुछ थ्योरम्स को रिजल्ट लिखे हुए हैं, उनको देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। एवरी बाउंडेड फंक्शन इज इंटीग्रेबल आर, तो यही गलत है। इट इज नॉट नेसेसरी, तो यही हमारा सही स्टेट आंसर यही हो जाएगा, बिकॉज इनकरेक्ट यही है। एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल आर, ये हमारे पास सही है। सही मतलब यहाँ पर ये चीज गलत हो जाएगी।
and every continuous function is integrable r, it is also, and every constant finite is integrable r। तो ये सारे हमने थ्योरम्स पढ़ रखी हैं, कुछ हमने प्रूफ भी करे हैं। सेवेंथ नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका सोल्यूशन करा है। इफ एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज रेशनल एंड वन माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल, तो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। तो जो लोअर रीमान इंटीग्रल हमारे पास था उसकी वैल्यू थी 1/2, एंड जो अपर रीमान इंटीग्रल आया था वो π/4 आया था। तो इसको हमने सॉल्व करा था, तो दिस इज सिंपल सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो इन्होंने उसी एग्जांपल को यहाँ पर रख दिया है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एट्थ नंबर प्रॉब्लम क्या है, दैट इज इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन दिस क्लोज इंटरवल a comma b and gx maintain the same sign in it, then integration a to b fx into gx dx is equals to mu times a to b gx dx, where mu is any number between the infimum and supremum of the function, where m and m depending the supremum and infimum of fx in the closed interval a comma b। तो आइडेंटिफाई कि ये कौन सा रिजल्ट है या कौन सी थ्योरम है। तो इसको हमने देखा था कि दिस इज द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, और सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, सो दिस इज एक्चुअली फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो हम स्टेटमेंट पढ़े थे, जो हमने थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़े थे, हमने बहुत एक्सप्लेन करा था ठीक अच्छे से। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट क्या कहता है, ताकि जो प्रॉब्लम आएगी, जो क्वेश्चंस आएगा एमसीक्यू, उसी स्टेटमेंट या डेफिनेशन या सिंपल कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। ओके, so thank you so much for watching and learning mathematics with us. So we will meet in the next lecture with the next concept. Thank you so much.